Good evening, everyone. This is Shobhit Single, education consultant, leading YouTuber, book readers club admin, and I am the readers coach. And today I have brought exclusive podcast with one of the finest trainers of India. He is one of the best trainers I can think of. I'm very lucky to have him as my mentor in my life. His name is Akshay Agarwal. Akshay Thank is one you. of the best corporate trainers in India and has trainings. He has done trainings all 30 days of the month. He does trainings. He has done trainings with IAS officers. He has done training for Election Commission of India, Airtel, Sony, Britannia, Haldirams, Volkswagen, Hero Group, all brands that you can think of. He has touched almost every segment from entrepreneurship, from soft skills, sales, everything. He is under 30. He's at the age of under 30, I think 27 or 28. At such a young age, he is one of the finest trainers of the country. He has more trainings than 20-year-old experienced people in training industry. He's more experienced than these people in terms of the work that he has done. He's a graduate in law. He is a postgraduate in psychology. He has been awarded as the best psychology student award. He's also recipient of the Shri Baljeet Shastri Award. What all things he has done, and the most important thing that he has done, and the most prestigious award in his life and the moment is that he is part of the podcast. So, Akshay, how does it feel to be here? Thank you, Shobhit. I guess सारी achievements एक तरफ है, and to get on a podcast with a person like you, I guess this is one of the biggest achievement amongst all of them. So thank you so much for giving me this opportunity and coming on board with you and speak with you. Thank you so much, dear. Thank you, Akshay. Firstly, giving me your time. I know you are a very, very busy person. Among the coronavirus issue, also, you are conducting back to back online trainings. I know that you are very busy. Thank you अरे, so much for giving me your 30 minutes today. Thank you so much. totally fine, dear. Totally fine. You are not just a mentor or mentee का relation नहीं है. We are also friends, and I just got free from a training session, so I thought this is the right time before changing clothes. Let's give it a shot. So, Akshay, before we delve into anything, just a simple question. All the achievements I have, facts I have done, but one question, one intellectual or spiritual question, if you can answer me. Who is Akshay Agarwal and what is Akshay Agarwal's mission? Ah, okay. You have made me think, Shobhit. तो शोभित इसके आई गेस जो आंसर है दैट इज इंस्पायर्ड बाय वन ऑफ द सेलिब्रिटीज. तो मैं आपको एक आंसर देना चाहूंगा. दो अक्षय अग्रवाल है, तो आप पहले कौन से अक्षय अग्रवाल के बारे में जानना चाहोगे? एक जो कि एक ट्रेनर है, या फिर वो अक्षय अग्रवाल जो एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का एक लड़का है? आप पहले किसके बारे में जानना चाहोगे? मैं आपकी स्टोरी जानना चाहता हूँ अक्षय. सो मिडिल क्लास फैमिली, योर बैकग्राउंड, योर स्टोरी, दैट आई वांट टू नो फर्स्ट. So dear Shobhit, I come from a very normal humble background जहाँ पे वो घर में 100 रुपए की लड़ाई होना, झगड़े होना, और धनिया एक्स्ट्रा डलवाना, मिर्ची एक्स्ट्रा डलवाना. मैं उसी नॉर्मल घर से आता हूँ, और having wonderful loving parents with their extra love, और उनकी भी एक ही दुश्मनी है कि बस मोबाइल पे लगा रहता है. तो एकदम नॉर्मल बैकग्राउंड से आई कम. एंड when I talk about my professional life, then I am a most sought after trainer in this country. And as you rightly mentioned, I'm fortunate and blessed enough to probably work all the 30 days. So I'll tell you the correlation between the two. तो मैं घर पे एक नॉर्मल एक लड़का हूँ जो एक मिडिल क्लास फैमिली में जैसे घर पे रहता है, वही लाइफस्टाइल, वही मतलब एक बिस्लरी की बोतल है हमने आज से महीना 2 महीने पहले खरीदी थी, आज भी इसमें पानी भर के पीते हैं. बट जब हम बाहर जाते हैं, सो when I go and deliver trainings, I travel business class, I travel first AC, I stays in 5-star के suits में and all those things. So when it started with from the scratch. तब ऐसा सब कुछ नहीं होता था. And I have remained grounded. I guess that is another reason people love me the most. So I was very passionate since the beginning. कुछ मन था अलग करने का. So I have done my graduation in the field of law. Then I have done my post graduation in the field of psychology. So दोनों बहुत अलग-अलग चीजें हैं. तो अक्षय अग्रवाल एक ऐसा इंसान है जो डिसीजन ले लेता है और लेने के बाद सोचता है कि यार अब इस पे काम कैसे करें. तो मैं इतना डिसीजन लेने से पहले सोचता नहीं हूँ, जो मेरे मन में आता है मैं वो कर देता हूँ. तो आई गेस दैट इज अक्षय अग्रवाल. एंड जो दो पर्सनालिटीज हैं, अगर आप बाहर ट्रेनिंग के टाइम पे मुझसे मिलोगे, व्हेन आई एम टोटली सूटेड बूटेड इन माय टाई, इन माय प्रोफेशनल अटायर, सो दैट इज एक्चुअली द डिमांड ऑफ द सोसाइटी. So that is a portrayed Akshay which has to live in the market like a celebrity.
तो घर पे मैं नॉर्मल इंसान है, बट व्हेन आई गेट ड्रेस्ड अप एंड गेट इनटू द प्रोफेशनल टर्मिनोलॉजी, तो देन आई हैव टू लुक लाइक दैट. और इररिस्पेक्टिव मेरे घर पे क्या चल रहा है, मेरा मूड कैसा है, आई हैव टू बी वेरी हाई ऑन एनर्जी बिकॉज क्लाइंट इज पेइंग मी फॉर दैट. सो वहां पे कोई कॉम्प्रोमाइज अलाउड नहीं है. वहां पे द ट्रेनिंग हैज टू बी एनर्जेटिक. आई नीड टू हैव द ग्रेट फीडबैक, आई नीड टू डिलीवर वेल, एंड वहां पे आई हैव टू वर्क ऑन माई माइंडसेट एंड आई हैव टू बी अ फाइनेस्ट ट्रेनर. तो ये दोनों मेरी पर्सनालिटीज है, एंड दिस इज हाउ आई एम वर्किंग दीज डेज. Great, Akshay. Great. So, for our viewers today, because Akshay is a leading trainer, I want to be a good trainer in my life. So, we'll be talking about training industry, the Right. pros, cons, different aspects, niches, all these things we'll talk about. So, first thing first, Akshay, because in your introduction I mentioned that you have worked with big brands that we can think of: Volkswagen, Airtel, Sony, all these big brands. Akshay, one simple question: how do you get to work with all these like brands? How, as a trainer, we think about, okay, can I go and deliver? I'm afraid to even talk to these kind of brands, and you go and give training for days in those brands. How do you do that, Akshay? So Shobhit, as you like, I think this video will go to a lot of potential trainers and viewers who wants to be a trainer. So I'll tell you the secret right away. So Shobhit वैसे मेरा friend है, और ये जो Shobhit used to be my client long back. तो जब शोभित, मैं आपको बहुत फ्रैंकली, बहुत सच ऑनेस्टली बताता हूँ क्या किस तरीके से काम चलता है, ताकि हमारे बाकी व्यूअर्स को भी बहुत फायदा मिले. Correct. तो जब मैंने स्टार्ट किया था, आई स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच, जहाँ पे मुझे 1,000 रुपए पर डे मिलता था. आई यूज टू गो टू डिफरेंट कॉलेजेस एंड डिलीवर ट्रेनिंग्स. तो उस टाइम पे मुझे याद है, स्लीपर क्लास में भी जाते थे, बस में एकदम 100 रुपए की टिकट लेके भी, जो एक दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक बस पहुंचा देती है, वैसी बसेस में भी ट्रैवल किया है. तो व्हेन आई स्टार्टेड, आई न्यू आई एम गोइंग टू बी बिग. तो उस टाइम पे मैंने पैसों पे ना फोकस करके बस ट्रेनिंग्स पे ट्रेनिंग्स, बैक टू बैक ट्रेनिंग्स. तो जब आप भी जिस कंपनी का हिस्सा थे पुणे में, और आप भी मुझे ट्रेनिंग्स में हेल्प करते थे कि मेरे को ट्रेनिंग्स मिले, तो आपने देखा होगा मैंने आपको कभी किसी ट्रेनिंग के लिए मना नहीं करा होगा, और मैंने आपसे कभी किसी ट्रेनिंग के कमर्शियल के बारे में बात नहीं करी थी. तो व्हेन आई स्टार्टेड, तो मैंने ना बहुत सारी ट्रेनिंग्स बैक टू बैक करी, और जो मेरा कुछ कंटेंट था ट्रेनिंग का, वो इतना सॉलिड होता गया, उस पर इतना अच्छा फीडबैक मेरे को मिलता गया कि जब मैं रात में सो रहा होता हूँ ना, आज से 2 साल पहले जब मैं सो रहा होता था, अगर आप मेरे को लात मार के भी आधी रात में जगाओगे, तो मैं उस कंटेंट को बहुत कंफर्टेबली डिलीवर कर सकता हूँ. तो इतना जब कमांड आ गया, उसके बाद जब मेरे को धीरे धीरे मतलब स्टार्ट किया मैंने एयरटेल कंपनी से, उनकी बहुत मैं बेसिक लेवल की ट्रेनिंग करता था, जो एक बोलते हैं एफओएस ट्रेनिंग. एफओएस मतलब फीट ऑन स्ट्रीट. तो वो बहुत नॉर्मल लेवल के एम्प्लॉयज होते हैं, ऐसे एम्प्लॉयज जो शायद 12वीं पास भी हो सकते हैं. सो दे आर एज गुड एज कॉलेज स्टूडेंट्स. तो वहां से स्टार्ट किया. वहां से मेरे को जब अच्छा फीडबैक मिला, तो जब आपने क्वेश्चन पूछा कि बड़े कॉर्पोरेट्स में कैसे जाया जाए, तो शोभित, आई डोंट हैव एनी कॉन्टैक्ट्स. मेरा कोई नेटवर्क नहीं है, मेरे सर पे किसी का हाथ नहीं है. मेरे डैड इज ऑल्सो वेरी हम्बल एंड अ वेरी सिंपल पर्सन, और हमारी फैमिली में भी कोई बहुत रईस लोग नहीं है, या फिर कोई कंपनीज के एमडीज नहीं है, ऐसा कुछ कनेक्शन नहीं है मेरा. तो मैंने जब इन बड़ी बड़ी कंपनीज में एंटर किया, तो जो मैं इनको ट्रेनिंग्स देता था वो बहुत छोटी थी. बहुत छोटी मतलब कि मैं इनके बहुत बेसिक लेवल एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देता था, ऐसे एम्प्लॉयज जो शायद लेबर क्लास को भी मैंने ट्रेनिंग दी है. बट जब वहां पे उन लोगों ने मुझे देखा ट्रेनिंग करते हुए, और जब मेरी वहां के सीनियर लेवल मैनेजमेंट से बात हुई, देन दे रियलाइज कि यार अक्षय इज द गाय हु कैन गिव ट्रेनिंग टू अस आल्सो. और जब मैंने उनको ट्रेनिंग दी, उनकी सीनियर मैनेजमेंट में देखा, और आज की डेट में टचवुड, मतलब विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, वी हैव रीच्ड द लेवल कि वी डिलीवर ट्रेनिंग टू आईएएस ऑफिसर्स आल्सो. वी आर डायरेक्टली डीलिंग विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. सो आई एम टेलिंग यू अबाउट द जर्नी. तो ऐसा नहीं हुआ था कि सीधा एक दिन मुझे फोन आया कि अक्षय आप आ जाओ और हमारे सीईओज को और एमडीज को ट्रेनिंग दे दो. इट नेवर स्टार्टेड लाइक दैट. मैंने एक बड़ी कंपनी के बहुत छोटे हिस्से को ट्रेनिंग दी, वहां पे अच्छा फीडबैक लिया, वहां पे अच्छा कनेक्शन बनाया, और धीरे धीरे करते करते उसी कंपनी में बहुत हाई लेवल पे लोगों को ट्रेनिंग्स दिया. So Akshay, from the scratch, so rough figure, approximately, how many trainings you have done? Approximately. Shobhit, that's a very hard question. तो मैं 200 आपको plus, honestly 300 बताऊं plus. तो एक साल में मैं एक बारी एवरेज लगा रहा था. आई डू अराउंड 250 टू 280 ट्रेनिंग्स इन अ ईयर. ऑलमोस्ट उतना ट्रेनिंग्स मेरा रहता है. एंड आई एम अ वेरी न्यू पर्सन इन दिस फील्ड. तो मेरे को ट्रेनिंग्स करते हुए 3 साल ही हुए हैं अभी. तो 3 into 250 टोटल ट्रेनिंग बैंडेज अगर आप बात करोगे, इट वुड बी अराउंड 750 to 1000. 750 to 1000 trainings in 3 years. That's it. That's crazy, Akshay. That's crazy. I mean, I'm feeling so guilty that I don't work. looking at this, listening to this, I don't think I work as much as you do.
So Great, I Akshay, feel that's great. at this initial stage, शोभित, मैं ना किसी ट्रेनिंग को मना नहीं करता हूँ. तो मेरे पास Exactly. कुछ भी आता है, if my date is available. अभी तो आज की डेट में तो मेरी मतलब जितनी ट्रेनिंग, अगर आप मुझसे पूछ रहे हो कि आपने एक क्वेश्चन पूछा कि आपने कितनी ट्रेनिंग्स करी है, अभी आपने ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि अक्षय आपने कितनी ट्रेनिंग्स छोड़ी हैं. तो मैंने 1000 से ऊपर ट्रेनिंग्स छोड़ी हुई हैं, क्योंकि एक दिन में मैं एक ही ट्रेनिंग कर सकता हूँ. तो मेरे पास 3-4 जब कॉल्स आते हैं, एक दिन की वो ट्रेनिंग मुझे छोड़नी पड़ती है. तो मैं ये मेक श्योर करता हूँ कि अभी इनिशियल अपनी जर्नी में, अभी तो मैंने स्टार्ट ही किया है अपना करियर, तो मैं किसी भी दिन घर पे खाली ना बैठूं. मतलब बीट बी एनी ट्रेनिंग विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू माय डोमेन, आई गो एंड डिलीवर. So guys, for viewers, the biggest formula of getting good clients is networking, as Akshay said. You Absolutely. take small training, then someone will refer you. It's all a chain. It's like, don't say no to any training कि मुझे exclusive बनना है तो मैं high level की training करूंगा. You have done. I remember when I was working, you get 1,500 rupees per day, right? If I'm not Absolutely, wrong. absolutely. And Shobhit, today yes. you earn like, I don't know what is your per day charges today. But again, so the idea is don't say no to any training. Great. Absolutely. Great. Absolutely. So Akshay, before I enter in the coronavirus stage, that discussion I want to have, very very important. Just one small question. As a trainer, you deliver a training. So there are two aspects of any training. As a trainer myself, content and delivery. So I have seen many of your trainings. I've seen a lot of videos. Storytelling is your favorite tool. Absolutely. So how this storytelling came as a tool in you as a trainer? How storytelling is important for any trainer? Can you just talk one minute? I wanted to talk about. That's a very 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 important question, Shobhit, which you have asked. कि content होता है, delivery होता है. So I'll tell you personally what I believe. I may be wrong, I may be right. मेरे हिसाब से 90% it's your delivery and only 10% is your content, because content is free of cost available on Google. Correct. आपको वहां पे जाके बस ढूंढने की देर है, you will find everything there. So content is never a game changer. आप उस same content को किस एनर्जी के साथ, किस पैशन के साथ, और सबसे बड़ी बात है ऑडियंस को क्या फायदा होगा उस कंटेंट से, अगर आप ये रिलेशन बिल्ड कर लेते हो, देन यू आर अ गेम चेंजर. तो आई टेक पर्सनली स्टोरी टेलिंग एज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन. और मैं आपको स्टोरी टेलिंग की एक और बात बताना चाहता हूँ शोभित. आई मेक श्योर आई शेयर माई स्टोरीज मैक्सिमम, क्योंकि वहां पे जो ऑडियंस बैठी है ना, वो स्टीव जॉब्स को, बिल गेट्स को, जैक मा को, है ना, ये अंबानीज को, टाटास को, ये सबको जानती है. ये उनकी स्टोरीज नहीं सुनना चाहती. जब आप स्टेज पे हो ना, ये आपकी स्टोरी सुनना चाहती है. So I make sure to make a personal connection with my audience, and hence that I believe is a very strong reason that I get a good feedback. Correct. So guys, storytelling, as rightly Akshay said, content is not that important when you're giving a training. Delivery and the trust of audience in you, that is more important. Absolutely. So Akshay, touching a very very hot topic, touching a very global situation, coronavirus. Yes. I was just reading an article today. Automobile industry, because manufacturing is done in most of the Asian countries, right, is on a verge to divorce. In like 1 or 2 months, it will collapse. The travel industry might collapse in 1 month. What is the all manufacturing industry? Half of the world's manufacturing is done by China. We all know that it is already locked down. Right. And I was, as you're a trainer, I'm sure in your community many trainers are sitting idle, right? They're not getting any trainings. So millions of billions of effects are getting on training industry. People are not familiar with online mode of training till today in India, right? Like for example, Zoom calls, people are still struggling to have these kind of online. Absolutely. So Akshay, let's talk about the negative aspects of corona on this industry. As a trainer, what do you think? What corona has affected? How if corona has affected us in this scenario? Okay, that's a very good question, शोभित, कि हमारी ट्रेनिंग इंडस्ट्री पे, फ्रेटर्निटी पे कैसे फर्क पड़ा है. So I will tell you शोभित, जो बहुत बेसिक ट्रेनर्स हैं, जो लोगों का जो रेवेन्यू मॉडल सिर्फ इसी चीज के अराउंड रिवॉल्व करता है कि वो एक दिन घर से निकले, ट्रेनिंग करा, वापस आए, अर्न किया, और जिनकी अर्निंग सिर्फ यहीं तक सीमित है, तो वो लोग तो बेरोजगार हो चुके. मतलब आई एम रियली फीलिंग बैड टू शेयर दिस विद यू, बट उनके पास देयर इज नो सोर्स ऑफ इनकम because they were only dependent on this one source of training, physical training. Absolutely. तो उनके पास और कोई मॉडल नहीं है. तो डेफिनेटली, और मैं आपको बताऊं, ट्रेनिंग इंडस्ट्री में 75% ऐसे ही ट्रेनर्स हैं जो कि ट्रेनिंग मैंडेट्स पे जिंदा है. मतलब टीएमडी, जिसको हम ट्रेनिंग इंडस्ट्री में बोलते हैं, कि आपने फिजिकली जाके कितनी ट्रेनिंग्स करी, जो अभी आपने थोड़ी देर पहले मुझसे पूछा था
कि इन 3 साल में लगभग मैंने 750 से 1000 ट्रेनिंग्स करी हैं, तो मैं अब वो 750 से 1000 ट्रेनिंग्स नहीं हो रही है। बट मैं थोड़ा सा पॉजिटिविटी की तरफ ज्यादा ध्यान देता हूँ, तो Okay. हाँ, बिफोर correct. यू आस्किंग मी आई डायरेक्टली जंप ऑन टू द पॉजिटिव एस्पेक्ट। Okay. Okay. जो ऐसे ट्रेनर्स हैं जिन्होंने अपना होराइजन ब्रॉड कर रखा, जो सिर्फ ट्रेनिंग का हिस्सा ना हो कि कोचिंग, कंसल्टेंसी, ट्रेन द ट्रेनर, पर्सनल डेवलपमेंट, जो उसके ब्रॉडर एस्पेक्ट्स को टच कर रहे थे, उनकी चांदी हो गई। Correct. उनकी चांदी कैसे हुई है कि भाई दे आर नाउ डूइंग 1-to-1 सेशंस ऑन स्क्रीन, Correct. दे आर नाउ डूइंग ट्रेन द ट्रेनर सेशंस वर्चुअली थ्रू इंटरनेट, पर्सनल कोचिंग वो लोगों को दे रहे हैं, कंपनीज के साथ वेबिनार्स कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली एज अ ट्रेनर वन हैज टू अंडरस्टैंड कि आपको ट्रेनिंग इंडस्ट्री में अपना होराइजन ग्रो करना पड़ेगा। होता क्या है, मैक्सिमम ट्रेनर्स क्या गलती करते हैं कि वो ना अपने डेली वेजेस पे उनको मजा आता है, क्योंकि डेली वेजेस में ना अमाउंट बड़ा हाई होता है कि आपको एक दिन का 15,000 रुपए, 10,000 रुपए बड़े इजीली मिलता है, तो लोग ना बड़ी जल्दी उससे अट्रैक्ट होते हैं। ऑन दी अदर हैंड ऑनलाइन अपना बिजनेस डेवलप करने को उसमें टाइम लगता है, उसमें इमीडिएट इनकम कुछ नहीं होती है, तो आपको 15-20 दिन खाली भी बैठना पड़ता है। तो वो लोगों ने नहीं किया, अब जिन लोगों ने वो नहीं किया वो सफर कर रहे हैं। So technically, you are saying that it's not only that we are conducting a training for a group, Yes. like a physical training, even a one-to-one call with a client, that is also part of training that you are telling, Absolutely, absolutely. and that is very easy in online business. Absolutely. और मजे की बात तो ये है कि नाउ कॉर्पोरेट्स आर रीचिंग आउट टू अस कि अक्षय दिस इज द टाइम कि हमारी सेल्स की 15 लोगों की टीम है, आप मंडे को इसके साथ टाइम स्पेंड करो, ट्यूसडे को इसके साथ टाइम स्पेंड करो, वेडनेसडे को इसके साथ कॉल करो, और 15 दिन इन 15 लोगों के साथ कॉल करो, उसके बाद हमें हमारे साथ अपना फीडबैक शेयर करो कि आपको क्या लगता है ये 15 लोग कहाँ स्टैंड करते हैं। तो मेरे पास और 15 दिन का काम आ चुका है। So in fact, Akshay, if as a trainer, if I make a module for a company, कि sir, I don't even give one training to all the people. I give different training to different people. That is also something, a module we can make, right? That is also a Absolutely, possibility. absolutely. Great, that's great advice, Akshay. That's great. So Akshay, because now everything is online, because of the next 15-30 days, I have subscribed to Zoom because I have to conduct my webinar. I have paid to, and trust me, this is a great tool. Zoom, Absolutely, all these absolutely. So what is your view in the next 1 year, 2 year, 3 years, even after the corona crisis is over? What is the future of online training? Do you think it will dominate the physical training market, or physical training will remain? But what do you think of online training? Shobhit, that's a very, very important question. And this morning itself, I was again having a word with a very senior trainer of this industry. So we came across this, we were having the same discussion, and actually we realized कि अभी जैसे फिजिकल क्राइसिस आया है मार्केट में, एक डिजीज आया है जो एक एपिडेमिक आया है, तो लोगों को घर में डाल दिया गया है। ऐसे ही कल को शोभित एक चीज हो सकती है कि इंटरनेट पे कोई वायरस आ सकता है, Correct. जिसकी वजह से लोग अपना इंटरनेट यूज करना बंद कर दें। तो मैं पर्सनली क्या मान के चलता हूँ, सो आई एम अ वेरी स्ट्रैटेजिक पर्सन, आई बिलीव सो, मतलब मैं अपने आप को तो मानता ही हूँ, ऐसा कोई मेरे को बेवकूफ भी बोल सकता है, बट मैं ये मान के चलता हूँ कि एक कहावत थी ना, यू शुड नॉट पुट ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट। तो किसी भी ट्रेनर को, किसी भी पब्लिक स्पीकर को अपने जो रेवेन्यू मॉडल है वो सिर्फ एक जगह सीमित नहीं रखना चाहिए। तो आप सिर्फ ऑनलाइन भी मत आओ और सिर्फ फिजिकल पे भी डिपेंडेंट मत रहो। इट शुड बी अ मिक्स एंड मैच ऑफ थिंग्स। फॉर अ पब्लिक स्पीकर टू रिमेन healthy and wealthy has to have more than 3 to 5 revenue models. So you're saying some clients should be physical when the crisis Absolutely. comes. For example, if there's a virus online, like internet virus might come. Yeah, that's very Yes. a possibility. So those Yes. physical clients should be there. And if something like that, Absolutely. this pandemic comes, then online people should also be supporting to you. That's Absolutely. हाँ, great. उसके अलावा आपका पर्सनल बिजनेस भी चलना चाहिए, कोचिंग का हो गया। और मजे की बात क्या है, लोग इस चीज को नहीं समझते कि जिस चीज में आप एक्सपर्ट हो गए हो, आपको नहीं पता कि आपके जैसे लाखों लोग बनना चाहते हैं। तो जो आपके जैसे बनना चाहते हैं, आप उनको कोचिंग दो। आप उस मॉडल को क्यों छोड़ देते हो? तो मैं ये ट्रेनर्स को बहुत सारे ट्रेनर्स को बताता हूँ कि जिनको एक पर्टिकुलर चीज में एक्सपर्टीज है, तो वो इंडिविजुअल्स को भी ट्रेन कर सकते हैं उस पर्सनल एक्सपर्टीज में। एंड यू चार्ज फॉर योर फीस, यू चार्ज फॉर योर सर्विस, व्हाटएवर यू वांट टू चार्ज। Correct. सो Correct. पीपल एक्चुअली ना, ये सारा सोच का गेम है। असली में कोरोना वायरस, मतलब कीपिंग असाइड द डेथ पार्ट एंड द नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट्स, ये एक अच्छी चीज हुई है। आपको टाइम मिलेगा सोचने का, कि इंट्रोस्पेक्ट करने का, कि भाई मैं अपने मॉडल्स कैसे बढ़ाऊं, मैं अपने काम को कैसे बढ़ाऊं, मैं अपनी नॉलेज को कैसे बढ़ाऊं, मैं अपने स्किल सेट को कैसे बढ़ाऊं। क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं ट्रेनर्स के साथ डिस्कशन करता था, मैं उनसे पूछता था कि भाई व्हाट नेक्स्ट, व्हाट आर यू डूइंग, तो उनका एक जवाब होता था, भाई टाइम ही नहीं है।
अब मैं मजे ले रहा हूँ उनके फोन कर करके कि अब तो तुम्हारे पास बहुत टाइम है, अब तुम क्या कर रहे हो. सो दिस इज द मोमेंट, you make the best use of it. So Akshay, for the next 15 days, let's say the country is on lockdown situation for next 15 days, or let's say 30 days, whenever, whatever time we have. Three biggest advice to any trainer or any consultant, any speaker, three biggest advice to self-development. What is the key to self-development? Three best tips if you want to give. So, शोभित, मैं बहुत frankly और बहुत honestly, मतलब अपना दिल से एकदम जो मेरे निकल के आ रहा है मैं वो बताता हूँ. First and foremost is read maximum self-help books. क्योंकि मेरा मुझे पता Why है am I doing this, Akshay? Why am I doing this? तो मुझे Because नहीं I पता. have a book readers club. नहीं, वो आपका पॉइंट है, बट मैं आपको ऑनेस्टली अपना बता रहा हूँ. क्योंकि यार देखो, मैं अपनी स्टोरी अगर शेयर करूं दोबारा, तो मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था, मेरे ऊपर कोई नहीं था. और कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहां पे आई यूज्ड टू इवन थिंक ट्वाइस टू टेक द एसी बस और अ नॉर्मल बस, टू नाउ ट्रैवलिंग इन बिजनेस क्लास एंड स्टेइंग इन अ सूट व्हिच हैज अ रेंट ऑफ 25,000 अ डे. तो वो जो जर्नी का जो एक मजेदार ये जो प्लेन वाला मोमेंट आया है, इससे बुक्स की वजह से आया मेरी लाइफ में. सो आई हैव रेड अ लॉट ऑफ सेल्फ हेल्प बुक्स. वहां से मुझे कंटेंट मिला, वहां से मुझे अंडरस्टैंडिंग मिली, वहां से मैंने अपने ऊपर काम करना स्टार्ट किया. एंड ऑनेस्टली कम्युनिकेशन जो वर्ड बोलते हैं ना लोग, कम्युनिकेशन मतलब संवाद की कला इज द बिगेस्ट थिंग माय डियर फ्रेंड. तो ये सब चीजें फर्स्ट फॉरमोस्ट इज द बुक थिंग. सेकेंड, आई वॉन्ट पीपल टू लर्न पब्लिक डीलिंग. अब ये पब्लिक डीलिंग सीखेंगे कैसे? स्पीक टू एज मेनी पीपल अराउंड यू थ्रू फोन. फॉर पब्लिक स्पीकर्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करो. मेरे को लगता है कहने को लोग पब्लिक स्पीकर होते हैं, बट उनका सर्कल इतना स्मॉल हो जाता है, इतना स्मॉल हो जाता है, क्योंकि वो जाते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, वापस आते हैं, सो जाते हैं. अच्छे ट्रेनर्स की बात कर रहा हूँ जिनके पास अच्छा खासा काम है. यू टॉक विद पीपल. आप लोगों की साइकोलॉजी को समझो इस टाइम पे, क्योंकि जब वापस आप स्टेज पे जाओगे आपको पता होना चाहिए आपकी ऑडियंस क्या सोच रही है. तो अपने आसपास की ऑडियंस के दिमाग को समझना ताकि आप उनके साथ एक कनेक्शन बना पाओ. दिस इज द राइट मूव. स्पीक विद पीपल, अंडरस्टैंड हाउ दे थिंक, हाउ दे मेक डिसीजंस इन देयर लाइफ, हाउ दे मेक रिलेशनशिप्स इन देयर लाइफ. उस चीज को जब इस चीज की समझ आती है ना किसी को, फिर जब वो जाके ट्रेनिंग्स करता है तो कनेक्शन एकदम स्मूथली ऐसे बनता है. एंड थर्ड थिंग, यू आस्क्ड मी थ्री, सो थर्ड इज वर्क ऑन योर हेल्थ, बिकॉज योर स्टैमिना ऑन द स्टेज इज एवरीथिंग. क्योंकि जब क्लाइंट आपको 8 घंटे के पैसे दे रहा है ना, तो वो ये नहीं चाहता कि 7 घंटे के बाद आप ऐसे होके बैठ जाओ. वो चाहता है कि 7 घंटे के बाद भी यू शुड बी रॉकिंग एंड शुड बी डांसिंग ऑन द स्टेज. और उस परफॉर्मेंस को लाने के लिए दिस इज द राइट टाइम टू वर्क ऑन योर हेल्थ. सो दीज आर द थ्री थिंग्स व्हिच आई फील पर्सनली should be done. Great. In fact, I want to add here that second point that Akshay mentioned, public speaking. Trust me, guys, I have been a public speaker for like all my life almost, and I've always been giving speeches on trainings on physical stage only. From last 1 month, I have been active on camera and video calls. Trust me, on speaking on a camera is much more easier than speaking in front of people. Because when you speak in front of people, you get all these gazes and you get nervous. You think about what they are thinking. On camera, you're just free. You're just yourself. You can be whatever you want. You can speak the way you want, and that is the best way to improve your public speaking. So that second point, I completely agree. This is a good time to improve your public speaking. That's great. That's Absolutely. Great. So Akshay, I think before we start to conclude it, I want to talk about now that you have mentioned training industry, and so guys, for those who don't know, I am part of Training Gurukul. Training Gurukul is a leading group. It's a group that is owned and created by Akshay Agarwal. Right. And it has a bunch of like-minded people. It has some of the best trainers in the industry, and I'm privileged to be part of that group. So that Akshay, before I give my feedback or I talk about that Training Gurukul, why don't you talk about what exactly is a Training Gurukul and how can it help those trainers who are looking for this kind of help? So thank you so much, Shobhit, for allowing me to speak on that. So Training Gurukul is basically a WhatsApp and a Facebook group where we actually help the trainers to become the best trainers in the country. एंड जो चैलेंजेस मुझे फेस हुए थे जब इस जर्नी में, व्हेन आई स्टार्टेड फ्रॉम द स्क्रैच टू बीइंग अ ट्रेनर हु इज ऑलमोस्ट बिजी 30 days इन अ मंथ,
तो ये जो गैप है, इस गैप में जो चैलेंजेस आए थे उन चैलेंजेस को हम कवर करते हैं। तो मेजर चैलेंजेस क्या आते हैं? फर्स्ट, अपॉर्चुनिटीज कहाँ से मिले, तो वी शेयर ऑल द अपॉर्चुनिटीज विच आर देयर। सेकंड, लोगों को लगता है हमने किसी ट्रेनर को काम करते हुए नहीं देखा, हमें पता नहीं ट्रेनिंग्स लोग देते कैसे हैं, होता कैसे है काम, तो हम शैडोइंग अपॉर्चुनिटीज भी देते हैं कि जो भी लोग ज्वाइन करते हैं वो एक दूसरे को जाके शैडो कर सकते हैं और देख सकते हैं कि असली में ट्रेनर ट्रेनिंग डिलीवर कैसे करता है, ताकि उनको सीखने को मिले और वो भी बैक हैंड पे जाके अपनी लाइफ में वो ट्रेनिंग्स दे सके। फिर लोगों को कंटेंट की दिक्कत आती है कि भाई हमें कंटेंट नहीं पता, हमें नहीं पता पीपीटीज कैसे बनाए, तो हम 90% रेडीमेड पीपीटीज, ई बुक्स, ट्रेनिंग वीडियोस वो भी दे देते हैं। उसके बाद हम लोगों को बताते हैं कि अपने लिंक्डइन पे कैसे काम करूं, अपने फेसबुक पे कैसे काम करूं, मतलब बेसिकली पुश सेल्स की जगह पुल सेल्स का फॉर्मेट बनाओ। पुश का मतलब आपको अपने आप को लोगों पे डालने की जरूरत नहीं है, आप अपना ऑरा, अपनी प्रोफाइल, अपनी विजिबिलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग करो कि लोग एक दिन आपके पास पहुंचना चाहते हैं। तो वो डिफरेंस कैसे क्रिएट करना है वो हम गुरुकुल के माध्यम से लोगों को बताते हैं। So, guys, talking about my own journey of training Gurukul, in last, I think during July or August, I joined training Gurukul, and I was very skeptical about the like, should I join? He's asking for a fee or something like that. हाँ, मुझे याद है आपका पेमेंट भी आपने दो मतलब थोड़ा रुक रुक के किया था कि Yeah, अक्षय so भाई मैं and so in July, to be very honest, in July I was just reading books, doing self development, no action, only planning, only development, no action. हाँ, Today I own my own club, Book Readers Club. Today I've done a successful webinar. I am a certified, I'm not certified, I would say I'm a part of Dale Carnegie Group. I am a registered trainer there. I conduct that is one trainings of for the best Dale Carnegie. organizations. There are a lot of other trainings that I've done, floor coaching, sales trainings. All these trainings, I have got all these opportunities exclusively from Training Gurukul created by Akshay. So Thank you so much, last Shobhit. 8 months, 10 months has shaped up my life. If you are a trainer, if you are listening to this, if you don't, you know us, you don't know us, if you are listening to this, reach out to me, reach out to Akshay. See if you can be part of the Training Gurukul. It is very helpful on a weekly basis. I would not say daily, very honestly. On a weekly basis, you get training opportunities, you get numbers, Right. you get email IDs, you get contacts of the people, HR people, training managers, L&D managers. You contact with them. Even if you're not going to give trainings, you get a good network database. You have an amazing Absolutely. Training Gurukul. It gives you a lot of stuff. It has given me a lot of stuff. The Thank you. reason I Thank have you. been able to develop myself, take a lot of action, is because of that group. So if you are remotely associated to training industry, or if you want to be excel in training industry, please be part of Training Gurukul. Not I'm not trying to brag about it. I'm being very honest. I'm a client of Akshay. Why would I be bragging about it? I'm just sharing my feedback. It is Right. really great. Lot of people who are in Training Gurukul are part of my Book Readers Club also. So Right. you can see the like-mindedness of the people. They all want to grow themselves. There is a person called Zaid Khan, right, from Mumbai in that group. He has created some amazing ebooks on fitness. I am a person who wants to become fit now. So I'm getting so inspired that staying at house, so many things I can do. I see people talking about parenting, psychology, so many diverse, dynamic things are happening on that group. It's amazing. Thank you, Akshay, again for creating a beautiful group. I guess thanks to people like you, Shobhit, and I would want to compliment you here. I guess हम लोग जो है ना, हम लोग बहुत basic काम करते हैं. We actually just provide you a simple platform and we give you access to those clients. उसके बाद Shobhit, you are the one who have actually earned that feedback and you've earned those trainings for yourself. तो मैं बाकी लोगों को viewers को बताना चाहूंगा कि we are not magicians, we are not game changers, we are actually just an aggregator who pushes you so that you come out of your comfort zone and achieve your goals. अब वो आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, मतलब आपके अंदर कितना बारूद भरा है, वो आप बताओगे. वी आर जस्ट अ स्मॉल चिंगारी. तो शोभित के साथ भी यही हुआ कि ही इज हिमसेल्फ सो पैशनेट कि जो भी ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज हमें डाली इसने फट से पिकअप करे सब कुछ एंड ही स्टार्टेड डूइंग दोस ट्रेनिंग. सो बाकी लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि वी आर नॉट मैजिशियंस, डोंट हैव वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अस. वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट. जो अपॉर्चुनिटीज आती है हम डाल देते हैं, यू पिक इट अप. बट दिक्कत क्या होती है, लोगों को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है. हियर वी कम इनटू द पिक्चर. क्योंकि जो मेरे को चैलेंजेस थे कि यार इनिशियली मुझे पता ही नहीं था कि ट्रेनिंग्स हो पा रही हैं, कैसे होती हैं, मैं क्लाइंट्स को कैसे अप्रोच करूं. और जब बाद में मैंने ऐसे ग्रुप्स को ज्वाइन किया और जो वहां पे बहुत ही एक्सट्रीमली हाई मैंने चार्जेस पे किए. हमने जो चार्ज रखा है एक्चुअली इट्स अ वन डे कमर्शियल. वन डे मतलब आप एक दिन में उतना पैसा अर्न कर ले तो दैट इज नथिंग एक्चुअली. तो मैंने वो इसलिए करा बिकॉज ट्रेनिंग्स आर देयर इन अबंडेंस. मतलब मार्केट में देयर इज अ ह्यूज रिक्वायरमेंट और लोगों को क्या है कि दे डोंट हैव द कनेक्शन विद दोस कंपनीज. सो हेंस वी कम एज अ ब्रिज. Again, so
don't even think about the investment, guys, because I tell you, because I always tell the best investment in the world is self investment. Right. When I was like, joining the training Gurukul, I remember, let's say if I paid 100 rupees to Akshay, for example, today with that same investment I'm earning more than 1,000 rupees, like I 10 times know, I i've know. i've earned back that money. वो सबका, I guess, most of हाँ, them, I guess 70 to yes, 80% of the people who are active, they have earned more than what they've invested, not even 10 times. yes. आपको तो शोभित कम चल रहा है, don't feel bad, but लोगों का 50 times 100 times भी हो चुका है. तो वो Yes, कोई yes, of दिक्कत नहीं है. course. मतलब basically the agenda is to nurture each other, and that is Yes. happening. I'm happy. And guys, one more thing I want to say, I'm not a full-time trainer, remember. I am, so basically what Exactly. opportunities that I've got is doing extra things outside my company, that I work Right. six days a week. So one day a week I take trainings or online trainings, and in that I have recovered so much. So imagine if I Right. was a full-time trainer, where would I have reached? So that is what Training Gurukul gives you. These That is what I was saying कि आपका तो अभी कम ही हुआ है क्योंकि आप तो सारी अपॉर्चुनिटीज ले भी नहीं हाँ, पाते हो. और हाँ, अपॉर्चुनिटीज से ज्यादा सी, इट्स नॉट जस्ट अबाउट अपॉर्चुनिटीज. हम्म, बेसिकली अपॉर्चुनिटीज इज ओनली 20% ऑफ द ग्रुप व्हाट वी आर डूइंग. सो आज जो आप वेबिनार्स कर रहे हो, आपको जो मोटिवेशन मिल रहा है, और हमारे बाकी सारे लोग भी, जैसे हमने जैद का नाम लिया, वंदना है, कीर्ति है, और इतने सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं. सुकन्या है, उसने अपना कोर्स लॉन्च किया है. तो जो भी ये सारे लोग हैं, ये एक्चुअली एक दूसरे को देख के बहुत ज्यादा डेवलप हो रहे हैं. और अभी कनिका ने कल अपना एक पहला वीडियो डाला, तो आई वाज टॉकिंग टू हर. तो शायद ये उसकी लाइफ का फर्स्ट वीडियो है जो उसने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इस तरीके से डाला है. सो पीपल आर कमिंग आउट ऑफ देयर ओन कंफर्ट जोन. मतलब लाइफ में जो वो हमेशा करना चाहते थे, जो वो हमेशा सोचते थे, आज वो कर रहे हैं. दे आर लिविंग देयर ड्रीम लाइफ. आई गेस यू आर ऑल्सो वन ऑफ देम. कि आप हमेशा सोचते थे कि यार मैं वेबिनार करना चाहता हूँ, मैं अपनी ट्रेनिंग्स करना चाहता हूँ, मैं स्टेज पे जाना चाहता हूँ. आप, मुझे याद है हम बॉम्बे में आज से 2-3 साल पहले मिले थे, तो वी वर डिस्कसिंग, और टुडे यू आर लिविंग दैट लाइफ. So that is what we feel good कि people are living their dreams actually. Great, Akshay, great. Thank you so much for being part of it. Before we leave, last one thing I want to discuss with you. Akshay, you mentioned the first thing that you mentioned in self development is book reading. And you said Absolutely. book reading is very important. So, guys, I run a club called Book Readers Club. So, I'm a reader's coach actually. I teach people how to read on a daily basis, how to utilize the reading. So, Akshay, you are also technically my mentee now. I Right. can say that. Absolutely. I'm I'm proud your to say mentor that. for book reading. So Akshay, how is your journey, or how's your? It's been almost 2 months now, almost 2 Right. months for book readers. What is your experience in book readers? So, शोभित, मतलब मेरे को बड़ा मजा आ रहा है आपसे बात करते हुए ना. आप ना मेरी सारी दिल की बातें निकलवा रहे हो. तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ, शोभित एक ऐसा इंसान है, आपके अंदर घुस जाता है. मतलब ये आपको रात में फोन करेगा, ये आपको सुबह फोन करेगा, या आपको दिन में फोन करेगा, ये आपको परेशान कर देगा. क्योंकि ये चाहता है कि जो भी बुक आपने प्रॉमिस करी है, या जो आपने शोभित को कमिट किया है कि आप ये बुक पढ़ने वाले हो, ये पढ़वा कर ही मानेगा आपसे. सो दैट इज द बेस्ट थिंग आई लाइक अबाउट यू, क्योंकि आई एम अ वेरी लेजी पर्सन व्हेन इट कम्स टू लेजर एंड ऑल. बट आई नो कि अभी मैं अपनी लाइफ के जिस स्टेज में हूँ, वहां पे मेरे को लेजर से ज्यादा मेरे को काम करना है. तो आई गेस मेरे को पर्सनली जो हेल्प मिली है वो ये है कि एग्जैक्टली मुझे वो चीज मिल रही है, मेरे को वो पुश मिल रहा है, मेरे को वो एक मेंटोर मिल रहा है. और एक ना कंपटीशन की फीलिंग सबसे बड़ी फीलिंग होती है कि जब मैं बाकी लोगों को देखता हूँ कि यार उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, उसने अपनी बुक का वो चीज शेयर किया, तो मुझे लगता है यार मैं कितना पीछे रह गया हूँ, जो ये लोग कितनी जल्दी जल्दी बुक्स को पढ़ रहे हैं. सो दैट फीलिंग एंड योर पुश एक्चुअली इज द गेम चेंजर. और बाकी जैसे आप बुक्स प्रोवाइड करते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, आई गेस आप ये चार्ज एक्सट्रीमली लो. मतलब शोभित का ऑलमोस्ट फ्री है. आप जितने का एक डोमिनोज तो और महंगा है. आप मैकडॉनल्ड्स में जितने का 2-4 बर्गर खाते हो, उतने में शोभित का वो लाइफ टाइम ग्रुप मिल जाता है आपको. तो मतलब आपको बस एक मैकडॉनल्ड्स की एक पार्टी छोड़नी है, यू आर अ मेंबर. उसके बाद शोभित की जिम्मेदारी है कि ये आपके पीछे पड़ेगा. सो आई गेस ये एक ऐसा ग्रुप है कि जो मैं पर्सनली भी काफी लोगों को रिकमेंड ऑलरेडी कर चुका हूँ, और वो लोग काफी लोग ज्वाइन भी कर चुके हैं. और होता क्या है कि शोभित शायद इनिशियली ना फ्री इस ग्रुप को लॉन्च कर रहा था. तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने शोभित को मोटिवेट किया था कि यार इसके लिए यू शुड चार्ज. तो शोभित ने बहुत मिनिमल फीस रखी है, बट वो सिर्फ इसलिए है ताकि थोड़े से सीरियस लोग आए. मतलब ये आपको उससे 100 टाइम्स मॉनेटरी वैल्यू की तो बुक्स ही मिल जाती है वहां पे आपको. सो मेक श्योर यू एनरोल योरसेल्फ इनटू सच ग्रुप्स सो दैट यू डेवलप अ हैबिट व्हिच कैन चेंज योर लाइफ. तो मतलब हाईली रिकमेंडेड माय डियर फ्रेंड. और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि शोभित मेरा फ्रेंड है या कुछ है. मैं पर्सनली उस ग्रुप का मेंबर हूँ. मैं देख रहा हूँ वहां पे बुक्स मिल रही हैं, और मैं बाकी लोगों के फीडबैक भी देख रहा हूँ, द वे दे आर एक्चुअली डेवलपिंग देमसेल्व्स. तो मजे की बात क्या है, मैं हमेशा इस बात को मानता हूँ कि आपका कंपटीशन ना किसी और से नहीं होता, आपका कंपटीशन अपने कल से होता है. और आज अगर आप अपने कल से बेहतर हो, तो यू आर विनिंग, यू आर सक्सेसफुल, यू आर अ विनर इन लाइफ.
तो इन ग्रुप्स के माध्यम से ये चीज होती है। तो हाईली रिकमेंडेड एंड थैंक यू शोभित फॉर ओपनिंग सच अ ग्रुप and giving me this opportunity to become your mentee over there. Thank you. Thank you, Akshay. Thank you so much for your kind words. It feels great that the best part about training industry is the feedbacks that you get. I mean, that is priceless. You Priceless. cannot justify monetary value at all, because the words that you get of people. Sometimes I get so much. The words make me emotional sometimes. That you have some, for example, when I was in Pune, I took a training, interview skills training for a student, and he was very problematic. Today he's working, Amazon. He's working in Amazon, and one of the best things that happened to him. Wow. And he still messages me, "Thank you, sir." So that those words are the best thing. So guys, those who are watching this, you're part of training industry, not training industry. This is a rewarding industry. This is rewarding, this is not just in commercially you terms of can money, earn a but lot. in terms of blessings. Exactly. And the most important part, it's a people's industry, guys. It's like you get connected to so many great people. Like, for example, Akshay, you only said that you are what you are, the average of 5 people that you spend time with. That's very important. So in training industry, in this, when you be part of these groups and community, you spend time with so many people who are working so hard. When you look at them, you feel, oh my God, I'm not doing anything. These guys are doing so great. Last 1 year ago, I didn't even know how to operate a laptop. Today, I'm conducting webinars on Zoom calls. और I would want to tell you कि जो हमारे ग्रुप के लोग हैं, वो मेरे को पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहे थे कि शोभित को बोलो कि प्लीज हमारे इंटरनल जो हमारा गुरुकुल ग्रुप है, वहां पे एक इंटरनल वीडियो बना के डाले कि Zoom पे सेशंस कैसे करते हैं. That I will definitely do. तो मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि दिस इज द बेसिकली इस इंडस्ट्री में जो सबसे मजेदार चीज है ना, यू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ. आज से 6 महीने पहले मुझे याद है, मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली. आई हैड टू कंडक्ट अ सेशन ऑन टाइम मैनेजमेंट. मैंने कहा भाई टाइम मैनेजमेंट नाम की कोई चीज होती है, मतलब सबके पास समय, सब मैनेज कर रहे हैं. फिर मैंने टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड बुक्स पढ़ी, पीपीटीज देखी, और मुझे समझ में आया इट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट एक्चुअली. और जब मैंने अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स और ये सब चीजों को समझा और अपनी लाइफ में उसको अप्लाई करना स्टार्ट किया, मेरे रिजल्ट्स बढ़ना स्टार्ट हो गए. मतलब उन सेम 24 घंटे में उस जो मैं 8 घंटे ट्रेनिंग में निकाल देता था, खाने पीने में निकाल देता था, मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैं कितना कुछ कर सकता हूँ. देन आई केम अक्रॉस दिस आइडिया ऑफ पर्सनल कोचिंग, ट्रेन द ट्रेनर, मेंटोरशिप. मुझे लगा कि यार कितनी सारी चीजें हैं जो मैं इसी 8 घंटे में कर सकता हूँ इफ आई मैनेज माई टाइम प्रॉपरली. और ये सिर्फ इस वजह से हुआ क्योंकि मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली थी टाइम मैनेजमेंट का सेशन करने की. मतलब दिस इंडस्ट्री मेक्स यू अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ. Very, very rewarding. I'm blessed to be a part of this industry. Thank you so much, Akshay, for being part of it. And guys, if you want to reach out to us, me or Akshay's, I'll post Akshay's LinkedIn link in everything in this post. If you want, he's a very, very humble person. You just message him, he will reply to you. He's not an arrogant trainer. I've seen Akshay. I've sent messages to many trainers. They have not even seen my messages. There are a lot of trainers like that on LinkedIn. So at least I feel very. So first thing I've decided that I will always be humble, and I will at least interact with as many people as I can. So we both are like that. You want to message us, want to talk to about anything, please let us know. We'll be able to help you. And Akshay, thank you so much for being part of the video. And namaste. Namaste, Corona वाले सबको नमस्ते. And last but not the least, I would just want to say to everybody कि यार हम दोनों बहुत नॉर्मल हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, और इफ वी आर एबल टू लिव आवर ड्रीम्स, एक्चुअली अटेन एवरीथिंग व्हाटएवर वी ऑलवेज वांटेड टू. सो ऑल द पीपल हु आर वाचिंग दिस वीडियो, आप लोग तो हमसे बहुत बेहतर हो, तो आप लोग तो क्या क्या अचीव कर सकते हो. तो ऑल द बेस्ट एंड मेक श्योर यू मेक द बेस्ट ऑफ दिस कोरोना टाइम. Thank you so much, Akshay. Thank you so much. Bye. Take care. All the best. Bye. Bye.